John woke to the shrill cry of his alarm clock and lay there, rigid, his usual morning condition. But there was another reason John couldn't get out of bed. It was the weight. A weight that had nothing to do with his muscles or fat or sweaty blankets. John was weighed down by a piece of paper. The invitation to his high school reunion. From across the years, the words he'd heard in the schoolyard were still clear. You're a loser. No one will ever love you. John had 3 months until the reunion to turn his life around. First, he needed to clean up. John called it his study, but it was basically for games and porn. Mostly porn. John had left his apartment late, but if he caught the express bus, he might make it to work on time. John didn't really like his job, but it had 2 qualities in its favor. 1, he could pay his rent, and 2, Barbara. Currently John's top candidate for his reunion date. John noticed a moderately attractive peen waiting at the stop. He tried to start a conversation and did not get the reaction he'd hoped for. It was probably because he was a minimum wage peen. She could probably sense it. The office hummed with cold fluorescent lighting. The air was cold and stale, lifeless. How long had John worked here? Long enough to deserve better. John was late, but he felt daring. He could sneak into the office through the archives, or he could stroll through the front entrance with enough confidence to bluff his boss. Predictably, he chose the direct route. John was nearly trampled by the morning coffee rush. Everyone else was hard at work, grinding away. John might actually get away with this. The boss. He homed in on John, deluging him with spit and buzzwords. The boss ran out of synonyms for John's failings and gave him an ultimatum. Barbara would definitely not be interested in dating John if he was unemployed. He had to get to the quality assurance department. There might be a faulty dildo just waiting to cost the company millions in lawsuits. John would have to test them all. Every atom of John's rectum began to vibrate
with the frequencies of pure pleasure. His orifice was a paradise. This vibrator would end all wars. It was good. That one was good too. The Prostate Pounder X900 series, the most advanced vibrator on the market. Sweet mother of no, John, that's too much pleasure for one anus to handle. John's butt hurt, but his heart was proud. If that vibe had gotten out into the world, it could have injured a customer as badly as it had ravaged his anus. The boss arrived and congratulated John on taking one for the team and jumping on the hand grenade, or in this case, putting it up his butt. John was having trouble following the conversation because he was quite high on suppository painkillers. And then the boss said it. Promotion. Finally, the company was recognizing John's hard work and ignoring his minor faults like lack of talent, constant lateness, and flatulence. John's new office smelt like polished wood and success. John's success. Sam dropped by. He'd heard John had been hurt. John said he was fine. He wasn't a softie to complain about a mildly ruptured rectum. Besides, he had a promotion to celebrate. John had met Sam in college during a sports ball game. He'd given him some stiff competition. Not stiff enough. They'd started at Flesh Corp product testing together. Nothing builds a friendship like a long day of dildo mounting. Yes, John had known Sam for a while. But John couldn't hang out with Sam. He had a reunion to prepare for. He was going out with Barbara tonight. He just had to ask her. Everyone was quiet, listening to the presentation. A good moment for John to ask Barbara out. That's not Barbara, John. Barbara agreed. Well, she nodded. Sort of. Things were really going John's way. John tried to act as suave as possible and listen to Barbara talk business. He didn't want to blow his chances at long-term love and short-term sex. Barbara began to talk about monthly feedback figures, and John started to zone out, imagining him and Barbara at the reunion, a power couple. She would make his classmates sick with envy.
if he could get her to tone down the boring chatter. John's balls were gripped by certainty. Barbara was the perfect date for the reunion. John thought he would impress Barbara by going behind the bar and showing the bartender a thing or two. Despite Barbara's protests that it was unnecessary, John knew that a true gentleman should follow her home. He was excited. There was still 3 months until the reunion, and he'd already landed his perfect date. All he had to do was seal the deal. Barbara thanked John for the evening and politely did not invite him inside for coffee or sex, even though John had dropped some pretty obvious hints he'd be into both, or just the sex. The door slammed on John's hopes. He didn't understand. He'd laughed at all Barbara's pie chart jokes. He'd listened to her boring stories. John felt empty. How could he get love? He felt like he was missing something, some key to attracting sex. But John was shooting blanks. What did Peens want? Then it hit John out of nowhere. Stuff. He had the success. He just needed to show it off. But where was John going to get all the stuff he wanted? John needed a sign. A new day, a new John. He waited outside his local buttload store for it to open, eager to spend his promotion bonus on stuff. The best way to impress women.
Suddenly it occurred to John that he was going to make a lot of choices. And every one of those choices would tell the world who he was. Did he want cheese or sausage? Delicious. Also delicious. How could John decide? What would a date think when they sat in John's home? Comfort or style? Nothing says style like an overpriced and uncomfortable chair. John weighed up all the differences, but this was a tough choice. Something told John this was the TV for him. John chose the extremely, obviously bad TV. John realized that it was only 2 months and 29 days until the reunion. Time flies. Cactus or rose? Was John a rugged hero or a romantic poet? If John grew his own flowers, then he'd save on romantic gestures in the long run. There was nothing John could take with him to the grave. Except his coffin. John liked to get his pizza delivered. That way he could see Delilah, the delivery peen. She always made him smile. Delilah thought pineapple on pizza was gross. This way she would never know John's shameful tastes. What bedding would Delilah prefer? John couldn't help wondering. Pizza sheets would show her that John could also deliver in bed. Devoid of any sense of style, buying new clothes would be John's toughest challenge. He bought an outfit without trying it on. It was a hula skirt. I thought you should know that much. It's not flattering. John might want to take the hem up a bit. Music, the food of love. Should John go retro sophisticated or just retro? John's personal nostalgia was more important than sound quality. Every can was made of metal, pulled from the bones of the earth, wrestled to the surface and smelted in roaring furnaces. All so John could buy peas preserved in salty water and stick them up his butt. John's new purchases were on the way to his apartment. All he had to do was invite a date over. One look at all his stuff and they'd be overwhelmed with sexual desire. John felt proud and also hungry. It gave him an idea. He should invite Delilah over for dinner. John was excited.
भाई साहब आवाज आ रही है, भाई साहब आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बस सही है फिर से बताइए। स्टीम खोला, स्टीम खोला हमने पहले। ओके बस खुला, अपडेटिंग स्टीम, वेरीफाइंग इंस्टॉलेशन। ओके फिर मल्टीप्लेयर में वो एक चूत सी चीज में सर घुसाना पड़ता है, क्या होता है वो ढक्कन में यार मैं तो खोलने तो दे भाई। बड़ा यार भाई। एक आएगा होस्ट, एक आएगा ज्वाइन। हाँ जॉन जॉन का रियूनियन था। है। पहले भाई उसने डिशेस साफ करी तोड़ दी टोपी में फंसा के। खुल गया स्टीम खुल गया। क्या आ रही है स्टीम में? नाइस। बोला क्या बोला यार ब्रो, बस खुल गया। एस्केप या फिर एंटर कुछ दबा वगैरह है। एंटर दबाओ ना। तो हाँ रुक जाओ। बोला खुल गया भाई। हाँ तो फ्री लाइव्स व्यू। ऑनलाइन मल्टीपल में जाना। हेलो रुको भाई रुको, ऑनलाइन मल्टीपल में गया। ऑनलाइन मल्टीपल में जाना। हाँ ठीक है अभी फिर। तो बहुत सारे चेंबर बने आ गए। हाँ होल्ड तो अप टू। कोई सा भी एरो की दबा दे, नीचे वाली ऊपर वाली। ठीक ठीक है बाबा। हो रहा है, रुको भैया हो रहा है, रुक जाओ सबर करो। क्या है हुआ अभी। क्या हो रहा है साला? हाँ, नीली स्क्रीन आ रही है बिल्कुल। हाँ हो गया। इसमें लिखा है इनपुट रिक्वायर्ड हर जगह। हाँ तो इनपुट रिक्वायर्ड जहाँ लिखा है उसमें सबसे राइट वाले कॉलम में जा। ठीक है। हैं
सबसे राइट वाले में जाओ, उसमें लिख के आएगा होस्ट क्विक ज्वाइन ज्वाइन। अरे यार रुक जाए, कहाँ पहुंच गया यार ये? अबे क्या कांटों के साथ क्यों खेल रहा है ये? भाई क्या हो रहा है? क्या क्या हुआ न्यूबी? मेन मेन्यू, पता नहीं क्या हो गया यार, मेन मेन्यू में जाना रुकता है। हाँ ऑनलाइन मल्टीपल ऑनलाइन मल्टीपल, करता हूँ। फिर होल्ड अप टू कंसेंट, हाँ जोएनी नाम है मेरा, जोएनी। फिर उसके बाद राइट साइड में जो कॉलम होता है चेम्बर सबसे, उसमें जाना, ठीक है। उसमें फिर होस्ट देखो होगा, ज्वाइन कौन सा होगा, कॉलम है? ज्वाइन करना, ज्वाइन उसमें गेम। उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। अरे उसके अंदर जा तब आएगा। जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसमें हाँ जाओ जिसमें ना। कुछ नहीं लिखा है। हाँ गया। इसमें क्विक ज्वाइन या ज्वाइन गेम? हाँ ज्वाइन गेम। हाँ गया। उसमें क्या क्या आ रहा है? शॉर्ट बाय होस्ट मोड स्लॉट्स। होस्ट। होस्ट हाँ। रिफ्रेशिंग 100%। ड्यूक लोएंजेन ज्वाइनिंग। अरे भैया कहाँ है तू, कहाँ है भाई? ये क्या है भाई? ये कैसी हरकत है भाई? ओ भाई, ओ भाई अब भाई। रुक, यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा ये। अब अरे कुछ क्यों नहीं रहा है? अबे इसमें जो स्टार्ट होगा इनपुट रिक्वायर्ड में शायद। आ गया। रेसलिंग है देख, पहला राउंड सही। अब देख, यस ब्रो। देखो गेम देखो कितना तगड़ा है भाई। इधर आओ देखो भाई। नहीं भाई ये देख। अबे जीत गया। ये लेंडर अबे कैसे गया? मैं जीत गया अबे ये गिर भाई, बड़ा कैसे, मस्त है भाई देख। अबे ये गिर कैसे गया पे? भाई बाहर कूद गया भाई तू। ये खाना है। ओए क्या हो रहा है? अरे ओ भाई लंबा हो गया भाई, बहुत तगड़ा भाई। ओ भाई, ओ भाई मारो। ओ भाई अरे ये क्या साइकिल बन गई बे? ओ भाई, ओए बच, ओए हट जा ओए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अरे बच गया। ओ भाई क्या है ये? ओ भाई क्या भाई? राउंड थर्ड। गेम में ना जल्दी कर रही है यार भाई। ओए क्या क्या करना है? घुस क्यों नहीं रहा है? अरे गोल करना है शायद, येलो स्कोर्स। अबे कैसे बे? अब बम है वो। अब पिछवाड़े में लेके बुझा उसे। अच्छा मेरे को गोल करना है, गोल करना है, गोल करना है, गोल। पिंक स्कोर से ये बॉल से गोल करना है। फिर से मैंने स्कोर करा। बढ़िया लौड़ा। गोल करना है, गोल। मैं तेरी में करना है गोल। अरे भैया गोल। और ये अगली आ रही, वो मारा, वो मारा। तो तेरा बॉल स्कोर मारा। ज्यादा कैसे? मैं जीत गया। अबे अबे ये मैंने गोल कैसे हो करा रहा था है ना। ये? 2.5 जा रहा है भैया। भाई फाइन डाइनिंग, दिस इज फाइन डाइनिंग। खाना खाना है इसमें। ओरे रे, ओरे रे रे, ओरे रे भाई, ये कैसे खा रहे भाई? अबे 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 दोनों खा गया, साथ में खा गया। अबे और ये देखो इसमें
कांटा घुस गया भाई, अरे भाई और रोशन तो बोलिए रोशन तो खुद डलवाएगा अपनी में। रोशन तो यार करे तीसरा गेम कीप अप टू स्टेइंग, लेट्स सी। ओ भाई ये क्या है? अच्छा रेस है मैंने देखा है ये स्ट्रीम में देखा है मैंने, रेस है। ओए कांटे चुभ रहे हैं बहुत सारे। अबे तू पहुंच गया। मैं जीत गया अबे मैं रुक के यार। रेस है ये मस्त आ गया। अरे नो ये क्या हो गया? पुलिस ऑफिसर ड्रेस अनलॉक, मैंने स्कर्ट अनलॉक, ल्यूब अनलॉक। अब देख, अब मुझे मिनी स्कर्ट मिली ना तो मैं पहन लूंगा। ये देख, पुलिस ऑफिसर मिनी स्कर्ट, पुलिस ऑफिसर। अबे रुक जा। पुलिस ऑफिसर बन गया मैं। मैं डॉक्टर बनूंगा। जोनी भैया गुज्जा तगड़ा करके। अरे क्या हो रहा है? दिखाई नहीं रहा। अबे होस्ट स्टार्ट करना। ये क्या वक्त दी है? अबे कहाँ है तू? कहाँ है इसमें? मैं लेफ्ट वाले रूम में। बाहर जा। रोज पिकिंग, होस्ट डेट पिक ऑल द रोज, डेट नाइट। अच्छा रोज उठाने वहाँ से। पिक ऑल द रोजेस। अरे मैया आजा। अरे अबे ये क्या हो गया? अरे फंस गया। अबे कांटा चुभ गया बे। अरे मैया मेरा कौन सा वाला है? मेरा ऑरेंज वाला है, मेरा येलो वाला है। भाई ये हिल ही नहीं रहा है। भाई तू इतना कैसे उठा रहा है रोज? भाई मैं कद्दू उठा रहा हूँ, तू उठा रहा है देख। भाई ये हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। अबे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना उसको भाई, ऐसे कैसे हिल जाएगा अपने आप। ये देख ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर पूरा तगड़ा करके। अरे कुछ भी नहीं रहा है। और ये एक और निकल रहा है देख। Walk the dogs. Dogs are difficult. Dogs are difficult. अबे अरे ठीक है। ओ भाई रोड क्रॉस कराना है ना। अबे आजा। अबे कुत्ता मर गया। अरे गाड़ी बच गई। ओ भाई गाड़ी बच गई है। चल अरे रे टोपा। ओए हो गया, रोड पार हो गया। अबे हो गया। अबे डस्टबिन फंस गया। ओए भाई वापस ले आया भाई, मेरे को पीछे खींच रहा है भाई। भाई तभी कह रहा था डॉग सर्टिफिकेट भाई, सही कह रहा था मैं। ये क्या है? अच्छा इधर जाना है। डॉग पार्क चलना लौड़या। अबे वो तुझे घसीट रहा है साले। क्या कर रहा है वो? तुझे घसीट रहा है। अबे तू पीछे क्यों रुक गया? भाई मैं तो बढ़ गया, तू रुका हुआ है। अच्छा ये मैं हूँ क्या? अच्छा अरे मैं तुझे समझ, अरे यार मैं समझा, वो खुद को समझ रहा। अबे नॉबी अबे मैं समझा वो मैं हूँ। bowling 3 strikes and you are in. ये क्या है? ये इन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा भैया। ये हूँ मैं। इसी से गिरा दो। अबे यार, ये कैसे? अरे
वो अंदर क्यों चला गया भाई? भाई मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ? इसको तो तो मेरा बंटी कहाँ गया? मेरा बंटी मर गया। तो ले गया भाई वो म्यूजिक का। भाई ये कैसे, क्यों ऐसा, क्या है ये? अबे आधा आ रहा है वो पर तो आगे को आ। रुमन जॉइन रिटर्न क्या हुआ? तू कहाँ गया? कार्निवल आ रहा है तेरे में लिखा हुआ? हाँ हाँ तो सही है। तो क्या करना है इसमें? अच्छा चेरी खा के बीच का निशान लगाना है। अबे मेरा ये चल नहीं रहा पोपट। चेरी खा के बीच का निशान लगाना है। रुक जा। अरे उनने कैक्टस खा लिया पूरा। अरे भाई ओ भाई ये क्या हुआ? भाई तू कैक्टस ले रहा है भाई पूरा? कैक्टस ले रहा है यार, तू रहने दे यार। अबे अच्छा वो मैं हूँ क्या? अबे तू येलो वाला तो है। अबे मैं येलो वाला हूँ बे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। मैं येलो वाला हूँ बे, रेड वाला तू है भाई। हाँ मैं येलो वाला हूँ देख, मैं इधर को जा रहा हूँ अभी। अब मैं लेफ्ट को जाऊँगा देख, मैं ऊपर को जाऊँगा देख, अब मैं ऊपर को जाऊँगा। मैं येलो हूँ बे। डिनर डेट, द मेन कोर्स इज लव। अबे क्या है ये? ओ भाई ये क्या खाने को मिल रहा है बे? ओए ओए ओए। अबे पूरा डाल रहा है। पूरा मीडिया पूरा। और ये मर गया लो। वो आगे से कूद भी रहा है। भाई कैसे धीरे धीरे ले रहा है? ओ भाई जगह भाई हमारे से भी हो भाई। ओ भाई अरे भाई अरे भैया तगड़ा हो रहा कुछ। गुदगुदी कर रहा है। नेटफ्लिक्स नाइट, डोंट फॉलो अप द काउच। नेटफ्लिक्स नाइट। अच्छा गद्दे से नहीं करना है नीचे, गद्दे से नीचे नहीं करना है। टपा टप कैसे ऐसे कैसे कैसे टपा टप। अरे बढ़िया। अरे चुम्मे ले रहा है मेरे लौड़ा। ओ भाई ओ गिरा गिरा गिरा। ओ, बच कैसे गया बे? अरे देख ये क्या बना? ओ भाई चुम्मे लड़ी चल रही है। And they lived happily ever after. अबे खुल क्यों नहीं रहा गेम? वापस खुल गया। आर मेमोरीज। अरे बोली वो रिंग पैन अरे फोटो खिंच गई वे।
भैया इतना तगड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। ये क्या फादर है? फादर है ये? ओ ये फादर है। फादर भाई। वो काले काले कपड़ों वाले। अरे डॉक्टर, ओए इधर बच्चा हो रहा है। अबे मैं हूँ क्या भाई? कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम का। हेलो अपने को डिग्री मिल गई। ओ भाई तो तू मर गया भाई। मैकबुक का अलग गेम होता है। सॉरी ब्रो, सॉरी फाट तो कहता रहा हूँ मैकबुक के अलग होता है, डाउनलोड करना पड़ेगा तुझे GTA 5 वगैरह जो भी खेलना है मैकबुक के लिए अलग भाई भाई तू मर गया। है। अरे दे कहाँ से बनाओगे? भाई, मीठा बना दिया भाई इन्होंने, मीठा बना दिया भाई तू। है ओ भाई मारो। हाँ तो मिल जाएगा, फ्री भी मिल सकता है। उनका चल उसका लौंडा हो गया, उसके लौंडे को डिग्री मिल गई भाई। ओके। कपड़े बदलो आ जा। और मैं दोबारा होस्ट करता हूँ, ठीक है? मजा आ रहा है रोज करना पड़ेगा क्या? रुक तो हाँ होस्ट करना पड़ेगा, दोबारा होगा। मैं दोबारा होस्ट करता हूँ, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पार्टी आई एम द होस्टर हेयर। रॉबिन, माय नेम इज रॉबिन। इस बार हम बनेंगे ये वाले कपड़े पहनेंगे। जॉइन गेम। अबे ये तू नहीं है? मेन्यू। अबे ये कौन है फिर? जल्दी आ। ये हूँ मैं। ये तू ब्लैक वाला है? लाल वाला हूँ मैं। लाल वाला है? अरे मैं कौन सा वाला हूँ? हाँ मैं ब्लैक वाला हूँ ये। हैं? ब्लैक है ना तू? ब्लैक है तू? रुक जा, मेरे को स्टार्ट। पीवीसी। ओ भाई ओए ओए तेरे आगे कुंडल है ओए। तेरे आगे गोल्डन एंजल। अरे रे भाई मैं ये बुरा वाला हूँ। अरे भाई भाई will finish the race first. अरे पैसा ही पैसा। हमका पैसा मांगता। अबे ये क्या था वे? गया ही नहीं अंदर वे। ओए ऐसा क्या हुआ? हट, ये तो चीटिंग थी सरासर वे। नहीं नहीं, नो नो नो। और अपनी में घुस सकता है क्या खुद की में? अबे ये क्या है? ये चीटिंग है ओए। ओए एक हाथ छेद तो जोड़ देते। अब वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने वाले हैं ओए। ओए ये इतना ये क्या है बे? कवर
अनिल जीत गया, मैं जीत सकता हूँ अभी। हो गया। 24 inches. Angel was 24 inches. Oh भाई। स्कल शर्ट। तुम्हारा फोन का? चाहिए अभी। Host. I'm the host here. अबे हट जा। हट जा। अबे अबे swallow pills with your butt. अरे भाई बहुत जल्दी है तेरे को, हट। अबे भाई पिल्स। अरे भाई क्या कर रहा है भाई, दूर जा भाई। ये क्या था? खुद ही का। ओ भाई गंदे लोग यार, हट। आ जाओ रेसलमेनिया, इस बार नहीं गिरूंगा मैं। हट, बाहर जा, हट। अरे नहीं 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 नहीं। अबे येलो फिक्स। मैंने इतना बढ़िया खेला। अरे स्कोर कर भाई। अबे अबे ये हवा में खुद क्यों उड़ रहा है? ले, कहाँ गया वो? आ गया वापस। रुक रुक रुक। भाई व्हाट अ सेव भाई। भाई ये क्या कर रहे हो? गोल करना है, गोल। ये जो भी सामान आता है दूसरे पास देख रहा हूँ। पिंक जीत गया। मैं ये भी नहीं जीता। एक और अरे लिख के तो आ रहा था। मेरे में नहीं आ रहा भाई। रेस टू द एंड। और रेस करते हैं, आ जाओ। भाई ये सर पे क्या पहना उसने आगे? अरे भाई ये क्या कर रहे हो भाई, तुम तैर नहीं पा रहा भाई। हाँ, पानी में अच्छा नहीं चलता ये। भाई वो चिपक गया भाई। भाई तूने ये पत्थर मेरे लिए छोड़ दी। भाई मैं जीत गया भाई। फाइन डाइन। आवाज दे रहे क्या? भाई कौन बोल रहा है? ओ कमल। अच्छा उसमें बोला होगा। अरे भाई ये कर रहे हो भाई, खाने दो ना भाई इसमें। भाई कैसे साइड में फेंक रहा है? ओ भाई ओ भाई। ले ले। ओ भाई
हटा यार ओए ओए नहीं खेल ले ओए हट ओए ओए नहीं खेल ले ओए भाई वही ना आ गया भाई सामने ऊपर कर रहा हूँ मैं भाई